यानी टेंस के बारे में। ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेंस का, और आपके कम्युनिकेशन में ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम डिस्कस करते हैं अपने ट्रिक्स के बारे में। यूं तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते होंगे यूट्यूब पे या वेरियस अदर सोर्सेस के थ्रू, लेकिन जो हम अभी बात करने वाले हैं हो सकता है कि ये आपके लिए सुटेबल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माय चैनल होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस in English: past, present, and future. Yes, it's past, present, and future. So, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। इसके रूल्स को देखते हैं। प्रेजेंट इन अंग्रेजी बोलने के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई वर्ड सिर्फ बोल करके ही हम किसी के ऊपर इंप्रेशन नहीं बना सकते हैं, जब तक कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा एक्सप्रेशन उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इसमें हम अपने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि ये आपको हेल्प करेगा कि आप भी अपने बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और एक अच्छा इंप्रेशन अपने लिसनर के सामने क्रिएट कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन दिस। अगर मैं बोलता हूं मैं, यानी मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैं आपके बारे में भी बात कर सकता हूं, आपके बारे में भी बात कर सकता हूं, मैं उनके बारे में भी बात कर सकता हूं, हम सब के बारे में बात कर सकते हैं, हम सब के बारे में। मैं उसके बारे में भी बात कर सकता हूं और उसके बारे में भी बात कर सकता हूं। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन इंग्लिश। आई कैन से इट्स आई, यू, दे, वी, मीन्स वी ऑल। इट्स आई, you, they, we all. He and she. You can say he and she. तो सवाल ये आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस कहां हम लगाते हैं? सो फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट सिंपल. You don't need to go in first person, second person or third person. Simply remember one thing, that 4M means, 4 means is I, you, they and we. I, you, they and we. Okay, these 4. And M means more than one person. So if I take a verb, write means लिखना, आपको पता हो। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इट्स आई राइट, यू राइट, दे राइट एंड वी राइट, और अगर मैं बोलता हूं कि मोर मीन्स मोर देन वन पर्सन, चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा। सो मोर मीन्स बॉयज, so we can say boys right, girls right. So this way it's quite simple to understand. If I have noticed many students, they get confused, what is first person, what is second person, and what is third person. So instead of, it's better to keep this simple one word in mind, 4M.
4 means I, you, they, we, and more than one person. So now rest, whatever comes, you need to put s or es in simple present. For example, he writes, she writes, Ram writes, मोहन राइट्स. अगर मैं ये बोलता हूं कि राम एंड श्याम, obviously there are two, that means more than one person, so we can say Ram and Shyam right. It's not right. Okay, so remember one thing, 4M. Now let's come to the simple past. So it's subject plus V2 plus object. Here there is no need to remember 4M. Either it's 4M or non-4M, you need to put verb to. Means wrote, write, wrote, written. Writing and writes. So आप ये कह सकते हैं कि I wrote, you wrote, they wrote, we wrote, he wrote, she wrote, boys wrote, girls wrote. So this way we can, it's quite simple, in simple past tense, that subject plus verb to plus object. Now let's come to the future, simple future. So in simple future we can say, let's see the pattern. Subject plus will, shall plus object. No,